Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. I am very happy to share with you. आप मेरे से भी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि अगर आपने 10th जुलाई का पेपर देखा होगा कि उसमें क्या है और प्रेडिक्शंस में क्या प्रेडिक्ट किया है, आपको पता चल जाएगा कुछ भी डिफरेंस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टेम्पलेट एंड क्वेश्चन नंबर 14. Question number 2 was related to education, that is a gap year, and question number 14 environmental problems and shortage and resources. आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा. But today I am going to discuss the topics that are going to be related to your 17th paper. 17 जुलाई को जो थोड़े से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, आप प्लीज़ उनको नोट कर लो. टेम्पलेट्स में से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ रिलेटेड टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स कि हाई स्कूल में कुछ चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं. अब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि जो लैंग्वेज क्वेश्चन की मैं बता रही हूँ वही आए. लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द क्वेश्चन तो आंसर आपको उसमें मिल जाएगा. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट. उसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं म्यूज़िक एंड आर्ट. इट कैन बी साइंस, इट कैन बी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कुछ भी हो सकता है. आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हाई स्कूल की बात कर रहा है तो कुछ भी कंपलसरी नहीं चाहिए, और अगर प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट्स कंपलसरी चाहिए. सो द टॉपिक इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू एजुकेशन इन एनी वेज. इट कैन बी डिजिटल, इट कैन बी कंपलसरी सब्जेक्ट्स, स्कूल एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्कूल, कॉलेज, university grants should be given or not. It's going to be a complete topic related to this compulsory subjects. Then next question is going to be question number 4, and this question number 4 is related to media. Media का question पहले भी आया था, but this time media can be related to television, media can be related to internet, social media or any other media. What is the role of media, positive, negative, impact of media, something like that. Then there can be this question, that is water shortage. It can be shortage of anything, shortage of natural resources, shortage of human resources, any shortage of resources. What is the reason? Why people they are migrating from village to city? What are the reasons for the shortage? Or do you think the migration or urbanization, is it good in the cities, or urbanization is having a positive or a negative impact? इसके साथ पोल्यूशन को भी रिलेट कर सकता है वो. देन अनदर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैन बी एनीवेज. एक क्वेश्चन आया था काफ़ी टाइम पहले, इट वाज रिलेटेड टू टेलीकम्यूटिंग. टेलीकम्यूटिंग इज वर्क फ्रॉम होम. तो इस टाइप की कम्युनिकेशंस को एक बारी ध्यान से पढ़ लेना, एंड यू विल बी फाइंडिंग द सॉल्यूशंस देयर, एंड काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन द यूनिट्स सो दैट द क्वेश्चंस दे बिकम क्लियर टू यू. Another question is what I think is going to be question number 11, that is going to be related to advertisement. Advertisement can be anyways. It can be advertisement enhances the sales of the product. Advertisements are deceptive. Role of advertisement in marketing. Do you think the sales of the product depends only on advertisement? What is the importance of role models in advertisement? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना. Somewhat related to children, there can be advertisements. कुछ इस तरह से आ सकता है. अगर आप एडवर्टीजमेंट का यूनिट पूरा पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन को मोल्ड करके लिख सकते हो. ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, ये क्वेश्चन क्रक्स उसमें है, उसमें से ट्विस्ट एंड टर्न आप कर सकते हो. द कंप्लीट सॉल्यूशंस आर गिवन टू यू. Then another question which has been quite long, जो अभी तक नहीं आ रहा, that is related to health. It can be related to food, or it can be related to exercise, walk, or something like that. Why the health is deteriorating, what steps should be taken by the government, or do you think there should be government gyms? Should government spend extra money on health? Should people be provided with all the facilities that are related to the basic amenities or the health? Health के साथ पढ़ के जाना, health और some exercises, ये important है. उसके बाद क्वेश्चन आप देखोगे family. Family में structure of the family, why is it breaking? Joint families, nuclear families, or the families they are migrating abroad, the role of family. Children, they don't want to stay with their parents. 18 years के बाद they are leaving the house. Is it positive or negative?
or it can be even that family structure. What is the structure of the family and why it is changing in developing countries, underdeveloped countries, somewhat like this. List of questions हैं आपके पास, उसमें आप देख लेना. Then another question what I presume is related to sports. Sports is an important topic. Put stress on dangerous sports, or it can be any other sports. Should government spend money on local sports, role of sports in schools, colleges, education, and something like that. Now these are few of the topics to which you are going to put stress, and I hope they are clear. They are very much there in the templates. Kindly go through the templates. If you don't have, buy them. Usage of template is going to help you out. इसमें मैंने थोड़े से गेस्ट पेपर्स अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद और इंडक्ट करूँगी. लेट द पेपर ऑफ 17th बी ओवर. 17, 24 इनमें से हैं, बाकी आई विल बी पुटिंग अप मोर पेपर्स इनटू इट. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.